Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. So there were so many people that were reaching out to me for some personal questions through Facebook, Instagram, this and that. So I decided that, okay, let's just go live and try to see if I can answer them one by one. While people are still joining, I can. So I am on Instagram, but I really so uh, LinkedIn and everywhere I should be on, I think. Yeah, सही है, तो people can see me. वालेकुम सलाम. अच्छा जी, I can जी वालेकुम सलाम. अल्लाह का शुक्र जी. तो मान भाई थोड़ा सा ये पूछना था कि जो ये आप करवा रहे हैं एक्चुअली इसमें यह है कि सिर्फ डिग्री होल्डर ही कर सकते हैं, कोई भी एनीवन कोई कर सकता है? जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस. हमारा 3-4 इसमें होंगे प्रोग्राम. जो अभी इनिशियल प्रोग्राम हम करवा रहे हैं उसमें यू हैव टू हैव at least 6 semesters of any degree program, because we are not covering basic English language or basic differentials and mathematical things. We are assuming that you have read that in undergrad. What we are covering right now is that, let's just say if you are in an engineering, you have an engineering degree or a medical degree or whatever degree that you have, we will just try to teach you the programming skills and technical skills from there. So yes, you do need to have a degree, unless otherwise you can come to our internship program where we do not require a degree. There you can clear the interview for an internship, and we would love to have you, because we believe that programming does not require a degree itself. But for this particular program that you're asking, 1,000 training program, we are doing it with the government of Punjab. So we decided that we will do it with a degree program. Yes. एक्चुअली मैं जो था ना वो इट्स मीन जैसे आपने कहा कि कोई भी आपके पास हो सकता है, मैं Amazon पे एक्चुअली ऑलरेडी कर रहा हूँ. सही. तो इस वजह से मैं भी ज्वाइनिंग करना चाह रहा था. तो ये ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा? ये फिजिकल होगा. वी आर राइट नाउ नॉट वी आर नॉट डूइंग इट ऑनलाइन, बिकॉज हमने देखा कि ऑनलाइन में लोग उस तरह इंटरेस्ट भी नहीं लेते और उतना बेनिफिट भी नहीं होता. तो इसलिए इट हैज़ टू बी ऑनलाइन दिस टाइम. सो इट हैज़ टू बी ऑन साइट दिस टाइम. नेक्स्ट टाइम हम जो प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे हम उसमें ऑनलाइन सिलेबस भी लेके आ रहे हैं. ऑनलाइन के लिए आई रियली रिकमेंड के गो टू खान अकेडमी. दे हैव अ वेरी गुड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम. आई थिंक इट्स फ्री एंड यू शुड ट्राई दैट. So ऑनलाइन में उस तरह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए ऑन साइट इज द प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग. तो ये कहाँ पे लोकेशन आपके ऑफिस की है कि कब स्टार्ट हो रहा है आपका? Say, this will be in locations and all the other information will be announced on our pages, so you can just follow that. So yeah, let me take other questions also. So Shayan sab keh rahe hain, is it possible to meet you in Lahore? Shayan sab, it's very much possible. It's just that schedule has been very difficult recently, and what I've seen is meeting is difficult. But try to write your question to me on LinkedIn. I try to answer them. There are so many. I'm hoping that I will be able to go online. It's a live more, so that I can answer all your questions. But meeting, I can try. I'm really inspired from your cause. Thank you so much. Talha, what is the best time to hire? What is the best time to hire? It depends on your business. Whenever your business requires scalability, and that's the problem that you're trying to solve, that is exactly when you should hire more people. That's exactly what you. जी, thank you. आगे चलते हैं. फैसलाबाद में कब तक आ रहे हैं आप? So फैसलाबाद का हमारा प्लान था कि इसी साल में आएंगे, लेकिन इस साल में हम नहीं आ सके क्योंकि ये जो रिसेशन हुआ है उसके बाद बहुत सारे ले ऑफ्स लाहौर और इस्लामाबाद वाली कंपनियों ने भी किए हैं. और टू बी ऑनेस्ट, हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर कॉस्ट होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है. तो वी ट्राई कि वी गो in a new city when there is a need, or if we can work without going in a new city, we would want that. So फैसलाबाद में इस साल हमारी नीड नहीं रही. Next year inshallah we will definitely go. So Komal keh rahi hai, how are you sir? I'm doing amazing. Sir, in Azad Chaiwala interview you said that that learned the latest skills and join us. Which skills should we learn to join Devsinc? We are currently working in MERN and Python. MERN and Python is the top
thing that we are doing. So if you know MERN or Python, if you don't know that, learn online. But that's the top thing that we are looking at Devsinc right now. Internship program for non-coding background people के लिए things and days के बारे में गाइड कर दें. तो हमारा internship program is for technical people right now. हमारा जो training program है, that is for non-technical people. That will start. We will announce that on our social media. Follow that, and you will find out. Okay, when are we doing that? I'm a graduate and wants to join you, sir. Please apply online. We have many jobs opening, so please do apply. I'm a 5th semester student and Flutter application developer. Is there a way to connect with Devsinc in any way? Yes, Flutter. We are doing Flutter development in Devsinc. So if you are Flutter developer, do join. ये what it solutions वाले पूछ रहे हैं, तो we do have openings for that. Please follow our pages online. हम उस पे जॉब अनाउंस करते रहते हैं. सर जीपीए डिपेंड करता है. मुस्तफा हाँ, गालिबन मुस्तफा साहब पूछ रहे हैं कि सर जीपीए डिपेंड करता है या स्किल्स फॉर गुड जॉब. जीपीए नहीं डिपेंड करता. जीपीए इज जस्ट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन. आई एम नॉट सेइंग कि जीपीए डज नॉट मैटर एट ऑल. जीपीए डज मैटर. इट्स जस्ट अ फर्स्ट गुड इंप्रेशन दैट यू गिव टू द इंटरव्यू. देखो हमारे पास तकरीबन 16,000 से ऊपर सीवीज रिसीव होती हैं. हम उसमें से हम सबको कॉल कर नहीं सकते. तो हम किस बेस पे, हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव अ कैपेसिटी टू कंडक्ट 300 इंटरव्यूज पर मंथ, लेट्स सपोज. तो हाउ कैन वी जज कि किस बंदे को बुलाना है? तो वी विल जज इट बेस्ड ऑन जीपीए. ऑब्वियसली देयर इज नो अदर क्राइटेरिया देयर टू शॉर्टलिस्ट somebody. So probably that's how much GPA matters. But after that, your interview matters. How you manage your cash flow and how to set KPIs, please. So this is something that you need to do the start of the year. What we do is कि we last quarter में बैठ के हम अगले साल के KPIs projections बनाते हैं ताकि हम उसके ऊपर अपना अगला पूरा साल कर सकें और उसमें अपना cash flow को manage करते हैं. Please take some help from a good accountant. There are many out there. Try to do accounting even when before you grow. So usually what young entrepreneurs do is that they don't really understand the importance of a good financial planning unless it's too late for them. So do projections beforehand. That will really help. What is the best way for young entrepreneurs to gain clients overseas? The best way is to present yourself in a welcoming way. So there are, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि there are Upwork, there is Endela, TopTel, there are many other platforms available. Make a good profile. Spend time on your profile. So what people do is कि जैसा Gmail पे sign up किया, दस्ती sign up किया और दस्ती से आपने कर दिया कि अब इस पे मैं क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. ऐसा होता नहीं है. मेक अ गुड वीडियो ऑफ योरसेल्फ. शो देम दैट यू कैन रियली डिलीवर द वर्क. एंड दैट्स हाउ. अच्छा, शुरू में जो वर्क मिलेगा उसमें इतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा. रेट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें. रेट की इतनी टेंशन ना लिया करें. पहले प्रोफाइल बिल्ड कर लें और फिर इंशाल्लाह अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे. व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स? अच्छा ठीक है जी. और ट्राई के जो आपके शुरू वाले क्लाइंट्स हैं वो यूएस या यूरोप या कहीं बाहर कहीं हों. डिपेंड करता है कि जो अच्छा पैसा दे. सिंपल सी बात है, शुरू में कैश फ्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डोंट वेट फॉर यू टू हैव क्या कहेंगे इन्वेस्टमेंट को जितना डिले कर सकते हैं करें. इन्वेस्टमेंट इज अ नेसेसरी इवल. टेक इट इफ यू रियली नीड इट. अदरवाइज बूटस्ट्रैप इट. डोंट गो टू द मार्केट टू रेज इन्वेस्टमेंट. ट्राई टू बिल्ड योर स्टार्टअप. अगर यही इन्वेस्टमेंट रेज करनी, अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा बना देंगे आपके लिए बिजनेस. अच्छा जी. और अच्छा ये 2 प्लेटफॉर्म है जी, इंस्टाग्राम और यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसलिए आई विल कीप ऑन स्विचिंग. Please brief us about your institute and will you provide us work too in like internship depending on our aptitude? That is the plan essentially, because we are paying to train you, so we would like to have you afterwards, but you have to clear our interviews. Our interviews are of top standards. It's very difficult to clear an interview at Devsinc. We know that, but we will prepare you enough that you can go back in the industry and serve. And the whole idea is कि ecosystem की requirement इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारे पास जॉब नहीं मिलेगी तो कहीं और जॉब मिल जाएगी. We want to make you ready for the ecosystem. How about lower GPA? Again, as I said, GPA does not matter. We don't have a restriction on the GPA, but GPA does give a good first impression. So have a good GPA. Try to strive for a good GPA. But if you don't have it, that's fine. Can I join Devsinc? I'm in 6th semester of CS. Yes, you can, obviously. Homer, we are always hiring. So whenever we come to your university, you can come there or you can apply directly or on our website. When we get to know that we are selected or not. So after your interview, you receive an email within a week. If you don't, just reach out to us and we will update you on your status. So you can apply
on Devsinc, even if your interview is failed after 3 months. So if your interview is failed, you can try again after 3 months. And you can, it is possible that first time you don't clear the interview, but in 3 months you can reapply, and hopefully you will be selected. Which should we prefer, certification or skills building? देखिए, skills building important है, certification matter नहीं करती. आपको skills आनी चाहिए. Certification is good to have. It's a good thing to show on your CV, and CV is required just to show up on your first interview. That's it. उसके बाद CV matter नहीं करती, उसके बाद आपका skill set ही matter करेगा. How to join your training program? हमने link दिया online, मेरी link Instagram की bio में मौजूद है. Please apply there. And see if you can clear that. That being said, इधर भी आए थे. आपने कहा कि CS student apply in training program. CS students के लिए हम internship program कर रहे हैं. They are already trained. We don't want to train them again. So for that we have internship program. Please join our internship program. We are just launching our 4th batch. I'm a tech student but want to join Devsinc in your training program. Can you please guide me? So again, the training program is really focused on people जो कि अभी जिनका कोई tech background नहीं है. We really want to serve that cause. If you already have done your training with CS, so why would you want to apply there? How can you balance your deen and dunya, and how do you do it? Most of the time we devs are working on 12 hours a day. How you stay motivated? So Farooq Saab, Shamas Farooq Saab, it's a very good question. Let me actually highlight it. So मेरा इस पे राय ये होगी कि if you need motivation to do things, that means you have not understood your why. Normally people start with something and they don't understand why they are doing it. So always start with a why, the bigger picture. What do you want to achieve? If your motivation, if you need motivation to go to gym, if you need motivation to pray namaz, if you need motivation to close a client, you will not be able to do that for long, क्योंकि motivation long term रहती नहीं है. कोई भी चीज जिसमें आप आज motivation feel कर रहे हो, कल आप down भी feel करोगे. तो you need to learn to do things without motivation. और कैसे करते हैं आप? अंडरस्टैंड योर वाई, मेक अ प्लान कि देखो मुझे 1 साल में ये अचीव करना है, मुझे 10 साल में ये अचीव करना है, और एवरी डे मैं क्या करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा. तो एवरी डे एंड क्वांटिफाइबल प्लान में यू कैन सी कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं. तो अगेन बहुत ज़्यादा वरी ना करें. पहले आदत बनती है फिर इबादत बनती है. बट स्लो स्टार्ट लें. एट द एंड ऑफ द डे यू आर द एवरेज ऑफ 8 पीपल दैट यू सिट विद. तो ट्राई है कि आपकी कंपनी दीनदारों की हो, आपकी कंपनी ऐसे लोगों की हो जो रिस्क टेकर्स हों, जो कि डिसरप्टर्स हों. तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प. How to gain sales for data analysis service for a startup, analytics service for a startup. So for us, LinkedIn Sales Navigator works very good. I think it's a very great tool. Try it there. If you can travel, if you have the means to travel, do travel. But if you can't, that's fine. Sales Navigator works just fine. Why is the training program only limited to graduates? Curious to know what's the reasoning behind it. अच्छा जी, खालिद साहब, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है. हमारी प्राइवेट कंपनी है, हमने इन्वेस्टमेंट भी रेज नहीं की और हमें कोई बाहर से पैसा भी नहीं मिलता. हम अपने पैसों से ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं. हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं, ट्रेनर्स भी लिमिटेड है. तो हम चाहते हैं इसका बेस्ट यूज पॉसिबल हो. देखो, इकोसिस्टम में चेंज पहले साल में आएगा नहीं, स्लो चेंज होता है. और वो स्लो चेंज इस तरह से होगा कि हम आज हम आउट कर रहे हैं इसको आप लोगों के लिए फॉर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिली, जो बेचारे पढ़ लिख गए हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, तो हम उनके लिए पहले करना चाह रहे हैं. फिर इवेंचुअली 2.0 में हम उन लोगों के पास भी आएंगे जिनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है और इंशाल्लाह नीचे तक जाएंगे. लेकिन ये एक इनिशिएटिव है. आई थिंक और कंपनियां भी इसमें ज्वाइन करेंगी, तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल कॉज सर्व हो पाएगा. When is your company will hire me? When you apply. I'm a Google Ads professional. How can I scale myself, or best way to scale? देखिए, best way to scale is very adamant and simple and बिल्कुल straightforward. कि you try to find a recursive life cycle of your business. कि यार ये business ऐसे conduct होता है पूरा का पूरा, और फिर you try to delegate that and try कि किसी और से conduct करवाएं, and that's how you scale. Usman साहब, such a great initiative. Would love to collaborate with you here in Islamabad. Aftab साहब, thank you so much for reaching out. Please do send me a DM and we will see. Sir, advice for first year students. Advice for first year student would be to understand what you want in your life. Try to have a clarity. If you have clarity in your mind, what do you want to become, the why of your passion, and that's how you will be able to grow. So understand which fields interest you. Try to understand that. First year के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अभी अपना passion को develop करें, लेकिन just keep listening. The universe is telling you things, just keep listening to it. When you hire fresh graduates,
इज जस्ट ट्रेनिंग। हाँ, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हम हायर नहीं कर रहे, इसमें हम ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा टू गेट हायर्ड। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ नेटवर्किंग फॉर स्टार्टअप्स? अच्छा जी, बेस्ट वे ये है कि हमारी दरखास्त है बाकी कंपनियों से कि वो भी करवाएं। हम लोग करवा रहे हैं, को फाउंडर्स मीटअप करवाते हैं एवरी वीक, फ्राइडे को करवाते हैं। हाँ जी, फ्राइडे को हम लोग करवाते हैं को फाउंडर मीटअप, तो उसमें आया करें, आपस में कनेक्ट हो सकें, ताकि हमारा उसका डिटेल चैनल भी है हम आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। और हम कॉफी कनेक्शन भी करवाते हैं। ये हम कब करवाते हैं? ये हम सैटरडे करवाते हैं। हर सैटरडे को हम कॉफी कनेक्शंस करवाते हैं। इसमें हम उन लोगों को बुलाते हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब में डिफिकल्टी आ रही है, और को फाउंडर मीटअप हम करवाते हैं एवरी फ्राइडे। तो डू कम ऑन दैट, दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। बट और नेटवर्किंग, आप जिस भी शहर के हैं वहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स करवाएं। आई नो मैनी कम्युनिटीज जो कि गुजरात में करवा रही हैं, और गुजरात डेवलपमेंट कम्युनिटी, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। So do that in your city if you're not from Lahore. I have DM'd you my question in detail, Mr. Usman, both on LinkedIn and Facebook. It's regarding a new tech company. I'm meeting you would be very beneficial. अच्छा शयान साहब, मैं आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह देख लूंगा, और मैं I'll try कि उनको आंसर भी करूं। असल में I have a slightly busier schedule, तो मुझे already I feel it difficult to do all that. I do not want to give my so my Instagram is managed by my team, but my LinkedIn I try to manage myself. तो मेरे पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कभी डिले हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह I'll try to answer your question. तो and I'll try to meet you also. What is the client base of Devsinc, and how do you have any and have you have any targeted niche? अच्छा, so Zobia, very good question. Our client base is mostly in the US. We are also in Europe. Our niche is not in terms of industry, but in terms of size. We are only focusing on startup clients. We are not looking for big clients. We want to grow with our clients. So advice for first year student, as I said, please try to find the clarity of what you want to do. When this live be available, will this live be available after it ended? पता नहीं, मेरी टीम बताएगी। अच्छा, this recording will be available after it is ended. English compulsory in interview internship? English compulsory नहीं है, but it does give a very good first impression. So try कि आपकी English अच्छी हो। हम US clients से काम करें, हम local clients से काम कर नहीं रहे हैं। I feel really sorry कि हमारी अपनी लैंग्वेज में हम चूंकि पाकिस्तान में उस लेवल का काम नहीं कर रहे जिस लेवल का पूरी दुनिया में हो रहा है, तो इसलिए एक necessary thing that we have to learn. So please do learn English. How to determine your strategies to achieve your goals, and what by the way, English learning के लिए I think try to develop a hobby that drives from this language. Try reading some books. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना एज अ टूल। इससे इतना डिप्रेस या ओप्रेस नहीं हो जाना कि आप अपनी उर्दू लैंग्वेज से ही आपको फील होना शुरू हो जाए कि इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है। उर्दू इज एन अमेजिंग लैंग्वेज। बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, बी प्राउड ऑफ योर रूट्स, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर रूट्स। इफ यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर रूट्स, यू विल नॉट नो एनीथिंग इन योर लाइफ। यू विल ऑलवेज बी अ wannabe and you will always be lost. तो impress ना हो इंग्लिश से, but just try to develop this skill. How to determine your strategies to achieve your goals, and what you see in the future of Devsinc in this terms. How do you determine the strategy to achieve your goals? So first of all, the goals should be defined. And if you can write down your goals now, so 90% of the problem is done. If you can clearly write down what are your goals, what is the thing that motivates you, तो जब goals clear हो जाए तो उसके बाद उसकी strategy बनाना आसान हो जाता है। तो you sit down, you think about it, you write about it. Writing से बहुत ज़्यादा clarity मिलती है, तो write about your problems clearly, and the way you are trying to achieve it, and then have it rechecked with some mentor. Find a good mentor in the industry, but do respect their time. People reach out to me all the time and they don't respect my time, and I just cannot focus on that. So if there are 1,500 people available that requires my mentorship, I do not have time to do that. I'll pick the right ones, and the right ones will be the ones that respects my time. And I also want to mentor somebody who is somebody that changes. So आप मुझे last time मिले और मैंने आपको कुछ advice की, और आप मुझे 6 महीने बाद मिले और आपकी लाइफ में कोई change नहीं आया हुआ, तो you are wasting my time and you are wasting your time. I would not be interested in you again. So please try to respect your mentor's time, but do find a mentor. कुरान में आता है वशाविरहुम फिल अम्र, अपने कामों में मशवरा किया करो, अपने कामों में मशवरा ढूंढा करें। Sir, I've heard that Devsinc hires software engineers from top universities like FAST and NUST. Is that true? Does that mean that graduates from the top 3 tier university don't have a chance at Devsinc? नहीं, ऐसा नहीं है। We do hire from all the universities. हमारे पास हर तरह की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मोस्टली फास्ट और नस्ट के जो लोग होते हैं उनका चांसेस ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यूज इज हायर। सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ प्राइवेट कंपनी, वी हैव आवर क्लाइंट्स दैट वी हैव टू सर्व। अब हम ऑब्वियसली हमारी प्रेफरेंस तो यही होगी कि हम
उन क्लाइंट्स को सर्व करें जिन क्लाइंट्स जो वो लोग हायर करें जो हमारे क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। तो फास्ट और नस्ट और ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं इनमें ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा करिकुलम फॉलो होता है। वी डू गिव देम प्रेफरेंस बिकॉज दे क्लियर देयर इंटरव्यूज बेटर। इफ यू कैन क्लियर योर इंटरव्यू बेटर and you're from some other university, that doesn't matter. We go in almost every university. Thank you, Mr. Usman, for answering my question. I completely understand. Thank you so much, Shayan sir. I respect that. Sir, we are a startup. Mohammad Rizwan sir, we are a startup, and now alhamdulillah we have scaled our company. We are upward to 20 members. Congratulations! But we are only getting low to mid-level projects from there. So we are looking to scale our company from 20 to 200. We are unable to figure out how to do so. So kindly assist me in this regard. Moreover, please share your views regarding AngelList. AngelList is a great platform. It's an amazing platform. LinkedIn भी try करें. LinkedIn भी बहुत अच्छा platform है. अब आप mid level पहुंच गए हैं. Mid level तक आपको Upwork ले आया है. Upwork की यही limitation है. इससे ऊपर Upwork आपको लेके जा नहीं सकता. अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें. You are on the right track. Try ये भी करें कि आप एक आध चक्कर US का भी लगाएं. Somehow एक आध चक्कर US का भी लगाएं. बेशक वहाँ पे स्टडी वीजा पे चले जाएं लेकिन चले जाएं. ट्रैवलिंग से काफी एक्सपोजर मिलता है. If you don't travel in your life, you will always think that you are the superior race and you have been given some power. You are the promised people. That's not true. Travel, have diversity of cultures, sit down with different people and try to understand them, and then you will know how much you did not know. Socrates ने कहा था ना कि wisdom lies in knowing that you don't know anything. And I personally think that traveling is the best coach. So do travel, Mohammad Rizwan sahab. That's how you will learn to scale your company, inshallah. Also, how to start your own startup having 6 years of industry experience. Try to find a problem that you're passionate about. Don't start with a solution. Never start with a solution. Whoever starts with a solution usually fails, because starting with a solution makes you religious about the solution, and your solution is bound to fail, and that's how you will fail. Try to find a problem that you're passionate about, and then find a solution that you think can solve the problem. Try to understand the problem better than your customers also. तो इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं. यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जी. लेट्स सी, काफी सारे क्वेश्चन होंगे. इंस्टाग्राम से मैं वो ऊपर भेजता क्वेश्चन, मुझे इट्स डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक. खैर, अच्छा जी, कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. Learn C++ for logic building in programming. Yeah, C++ is a great language. I personally started from that. How to make KPIs for teammates. Try to find KPIs for your business first, and then translate it in your team. अगर आप लोगों को अपनी KPI clear नहीं है तो अपनी टीम की KPI नहीं clear कर सकेंगे. What tips would you give to someone who is just starting a software house? Try to find your why. Why are you doing it? This is very important. If you don't understand your why, how and what, that you can figure it out later on. Simon Sinek ko sune, he's a good guy for you if you're starting up. So internship program और training program में क्या difference है? Internship program is for CS graduates, and इसमें हम hands on करवाएंगे. Training program is just like a classroom setting, and we are having non CS people in this. अच्छा, do you have any plans plans of tech for people who are non-graduates, intermediaries? No, for now we cannot afford that as a company. We don't have enough trainers, so we cannot do that right now. Sir, can I apply for training program? When will I expect a response from it? Please do apply. There is a form online in my bio. Response should be by the end of this year, inshallah. Assalamu alaikum, sir. I want to ask, meanwhile you can go to Khan Academy and start learning computer science. It's a free course over there. It's amazing. मैंने personally से go through किया है, बहुत कमाल course है. Women in Tech conference, when again it will conducted? And one more thing, I want guidelines as a CEO of digital marketing agency. Which things are important? Nazish पूछ रही हैं. Nazish, thank you so much for coming to our Women in Tech conference. I think conferences like that are very important to highlight the problems that women are facing every day. इस तरह की conferences हम करवाते रहेंगे इंशाल्लाह. Please stay tuned to our pages and you will see. अभी हम जो next करवा रहे हैं वो creatives की करवा रहे हैं. जितने भी हमारे पास content writers, videographers, जो भी content creators मौजूद हैं उनकी हम इंशाल्लाह मीटअप करवा रहे हैं. उसके बाद metaverse का होगा और उसके बाद फिर हम दोबारा women in tech पे दोबारा फोकस करेंगे. Meanwhile, आपको as a CEO of digital marketing agency, as a CEO of whatever you are, you need to focus on scalability aspect of your business. How will your business scale? Otherwise, if you don't think of scalability, you are one recession away from getting bankrupt. So do focus on scalability all the time. You are truly an inspiration for many. Fahad Tufail Saab, huge. I'm personally a huge fan of you. You always ask very good questions. I loved our meeting last time, and I hope to meet you again very soon. Zainab is asking, Salam Usman bhai, I just want to ask your thoughts on why UX is important for business, and do you think UX can bring value to your business? Why Devsinc don't have a UX designer position? So UX wise, मैं आपको बिल्कुल honest बात बताऊं, मुझे बहुत मायूसी है. मुझे पाकिस्तान में अच्छा टैलेंट UX का नहीं मिलता. I think UX
designers are the most highly paid designers in the world, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे नहीं हैं. There are few that are doing good job, but we are not able to find them very often. और हम इसमें ये डिपार्टमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुए. We accept our mistakes online. We do not have any problems in that. UX wise, we have failed the community. We were not able to build it very good, but we are inshallah focusing on it, or hopefully we will crack this code also. Islamabad office में मैं कब available हूँगा? There is a talk that is coming on in Comsets University Islamabad. तो उन दिनों में इस्लामाबाद हूँगा. Please do follow me on my pages and you will know. How do you find a mentor? Can you guide a bit more? So finding a mentor जी, आपको अपनी इंडस्ट्री, वो कहते हैं मशवरा अहल राय से करना चाहिए. हर बंदे से मशवरा नहीं करना चाहिए, और हर बंदा हर मशवरा नहीं दे सकता. ये बात भी समझ लें. Just because I am good in entrepreneurship, I cannot give you relationship advice. ठीक है ना? तो मुझे सिर्फ फॉलो करें उन चीज़ों में जो मेरे करने वाले काम है. लोग यहाँ पे बेवकूफ़ी ये करते हैं कि पीर चुनते हैं दीनदार और उससे अपने बच्चे के नाम तक पूछना शुरू होते हैं. ये बेवकूफ़ाना बात है. हर बंदा हर चीज़ का मशवरा नहीं दे सकता. चूज़ द राइट पीपल. तो मेंटर चूज़ करने का तरीका ये है कि अपनी इंडस्ट्री में देखें, अपने बॉस को देखें, उससे पूछें अगर वो आपके लिए टाइम निकाल सकता है. इंटर्नशिप प्रोग्राम, वॉलंटियर करें. डिफरेंट फ्यूचर फेस्ट हो रहा है, उसमें वॉलंटियर करें. वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे मेंटर्स. ट्राई टू find their time, respect their time, please respect their time. लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं जैसे मतलब आपने मुझे जवाब नहीं दिया. भाई मैं आपको, I don't owe you this, you are not entitled to anything. मतलब फर्स्ट अर्न द राइट टू बी इंटाइटल्ड. क्यों छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं? ट्राई टू फोकस कि आप इंटाइटल्ड क्यों हैं. तो ट्राई टू फाइंड अ मेंटर एंड देन बी रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर टाइम ऑल्सो. I've seen your interview with Azad bhai. You said you will be producing jobs in your company. I wanted to ask what job opportunities will be offering by you to those who have not IT backgrounds. अच्छा, हम नॉन IT बैकग्राउंड को ट्रेन कर रहे हैं. जॉब अपॉर्चुनिटीज फिर देंगे जब आप ट्रेन हो जाएंगे. If you don't know a skill, how can we put you on a job? तो it's very so again हमने ED सेंटर नहीं खोला. हमने जैसे private organization, we want to make profits, but we do want to serve this cause of IT disruption in Pakistan. तो जितना हमारी कैपेसिटी में है हम कर रहे हैं. गवर्नमेंट से भी दरखास्त है कि इसमें थोड़ा सा आगे आए ताकि हमारी भी हेल्प हो और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की भी हेल्प हो. वार्मली थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग अस. थैंक यू सो मच GD Korg. Thank you so much. Devsinc training program has ended. No, it's not ended. It's extended till 20th. हाँ, इसकी अब डेडलाइन गुजर गई. आपको फिल कर देना चाहिए था. हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई. कितनी एप्लीकेशन आई है इमरान साहब? हाँ जी, 3000 प्लस हैं. तो वी हैव इनफ एप्लीकेशन. तो सॉरी अगर आपने नहीं अप्लाई किया, तो नेक्स्ट टाइम जब ओपन होगा तब बता देंगे आपको. आई वांट टू आस्क इफ Devsinc Islamabad conducts Ruby on Rails in universities of Rawalpindi and Islamabad. If not yet, when you plan to conduct them? We are conducting Ruby on Rails in Fast University this year. I'm not sure about Islamabad. I can check. You can check on our Facebook pages. Event section में जाकर देख लें, वहाँ पे लिखा होगा. वरना आपको DM करके पूछ लें किसी Devsinc बता देंगे आपको कि वो कहाँ में करवा रहे हैं. When will you come to University of Lahore? When they invite me, inshallah, I will come. If a person has done his degree in 5 years, does that means that matters in hiring, sir? In 5 years, no, it should not matter कि कितने साल में की है. You should be ready for any question in an interview. अगर आप किसी क्वेश्चन को डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर बहुत काम खराब हो जाएगा. Just try to answer honestly whatever the answer is. अभी परसों मैं इंटरव्यू ले रहा था and I asked somebody what are your hobbies, and I just asked generally, and she said कि I read books, and I was like, what's your favorite book? And she doesn't know what her favorite book is. So that clearly shows that they don't read books. So इसने कहा कि philosophy books पढ़ती है. What's your favorite philosopher? She doesn't know anything. So don't try to claim कि मैंने 4 साल में डिग्री की है. झूठ नहीं बोलें, but जो भी बात बोलें उसको डिफेंड करें. There has to be a story, and if you have done something bad, just admit it in the interview. That's fine. People will choose you. The right people will still choose you. But if you lose your integrity, you are वैसे भी grow करने के काबिल नहीं है आप. How do you get your clients? Mean which platforms? Upwork is a slightly it's a platform that is good for 0 to 20 kind of size, or maybe 50 maximum. But LinkedIn Sales Navigator is very good. AngelList, somebody mentioned, it's very good platform. Overall Google करें कि कहाँ पे jobs post हो रही हैं. ये trend change होता रहता है. अभी मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा सा change हो जाएगा. The importance of DevOps in Pakistan tech industry. DevOps की जी बहुत ज़्यादा important है. I think Pakistan industry lacks in 2 things. One is DevOps, second is UI UX. I think इसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है. हमारे पास अच्छे लोग मौजूद नहीं है. साइबर सिक्योरिटी की there will be a huge need, and I do not see any big organization focusing on that except a few, and shout out to them. InvoZone is doing an amazing job. So Furqan Aziz sahab, thank you so much for doing that. I do not have any problem in shouting out our competitors. I think when they're doing a good job, they are doing a good job.
तो डेवऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमारे अनफॉर्चुनेटली ना अच्छा काम हो रहा है, ना सिखाया जा रहा है। तो आई थिंक एनीबॉडी हू टेक्स एन इनिशिएटिव इन दैट विल बी सक्सेसफुल। आई वांट टू लर्न द प्रोग्रामिंग बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम बिजनेस फील्ड, सो गो टू खान अकेडमी, search for computer science, do that course. You will find out if you like it. If you like it, you have a passion for it, do that. We'll hire you. Anybody will hire you if you have an aptitude and you know programming. Degree doesn't matter. Sir, I am done my bachelor. अच्छा, खान अकेडमी इज गुड क्योंकि वो आपको जनरल कंप्यूटर साइंस सिखा रही है। लैंग्वेजेस के पीछे जाएंगे, उसके बाद यूडेमी पे या कहीं पे भी आपको लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, पूरी जिंदगी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, लेकिन पहले सीख लें कुछ, पहले प्रोग्रामिंग सीख लें। लोग बहुत ज्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से मुझे सब कुछ मिल जाए। जल्दी से नहीं होगा, स्लोली शिफ्ट होती है। बहुत मुश्किल काम होता है अपनी फील्ड को शिफ्ट करना, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन है। तो आज शुरू करेंगे, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। क्या आप ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप ऑफर करेंगे? ट्रेनिंग के बाद हम लोग जॉब्स ऑफर करेंगे टू दोज हु क्लियर आवर इंटरव्यूज। वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। बट व्हाट आई हैव सीन इज के यूजुअली हमारे इंटरव्यूज मुश्किल होते हैं, वो इतने आराम से क्लियर होंगे नहीं। आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर व्यूइंग योर अकाउंट दैट यू आर द सेम पर्सन हु आई मेट एट ईसी स्टॉल एट CPC 22। I tried but didn't get internship at Devsinc and not know I was meeting the founder. Charanji, thank you so much. I would love to meet you again sometime. How you make KPIs for teammates? Again, KPI for business बनाएंगे, वहाँ से KPI for teammates भी निकलाएंगे. What tips would you give to someone who is just starting a software house? Think about scalability from day one. सर, मैंने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एप्लीकेशन दी, FSC प्लीज करना। FSC के बाद भी हम कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। आई एम एन इंडस्ट्रियल डिजाइनर, आर यू गाइज गोइंग टू लॉन्च बिजनेस डेवलपमेंट कोर्सेज? बिजनेस डेवलपमेंट कोर्सेज अभी हम नहीं शुरू कर रहे हैं, हम टेक्निकल कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं थोड़े से क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। it becomes hard to get right candidates. Any tips for filter out the best? अच्छा, it becomes hard to find the right, ये हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है जी कि हमें भी राइट कैंडिडेट्स नहीं मिलते। बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट करने पड़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमने ऑनलाइन इंटरव्यूज भी करवा के देखे हैं, पर वो इतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आता। पीपल फेल दैट वेरी ऑफन। तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर फिगरिंग आउट ऑल्सो। तो अगर आप फाइंड आउट करें तो हमें बता दें, हम भी इस प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा अभी इंडल्ज हैं। लोग बड़ा माइंड भी करते हैं कि यार हमने इंटरव्यू दिया, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, या हमें आपने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यार मुश्किल काम है ना, मतलब इंटरव्यू क्लियर करना। व्हेन वी हायर you, you are our problem, you are our family, we want to retire you with us, लेकिन we want to hire the best people, simple. Usman bhai, why most companies are laying off their employees these days? I think there are two reasons. One, if recession just started and they are laying off, that means they've not done the planning right or they were never focused on retention. तो ये दो रीजन हो सकती हैं। आजकल रिसेशन बहुत हार्ड हिट कर रहा है, और इस महीने स्पेशली बहुत ज़्यादा मसला ख़राब चल रहा है। लेकिन ओवरऑल डेवसिंक अल्हम्दुलिल्लाह वी प्लान फॉर नेक्स्ट 1 year 2 years, बट हमारी प्लानिंग अपनी जगह होती है, अल्लाह की प्लानिंग अपनी जगह होती है। तो एट सम पॉइंट हर कंपनी को ले ऑफ करना पड़ता है, लेकिन दैट डिपेंड्स आल्सो कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म रिटेंशन पे फोकस्ड है और कौन सी कंपनी नहीं है। जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स जो अभी ले ऑफ करें ना, जस्ट रिमेंबर देम, so that when you are applying after recession or when you are going on a job, to just remember that these were the companies that laid you off when it was bad time in the industry. Usually companies को प्लान करना चाहिए रिसेशंस को, हर 6-7 साल बाद एक मेजर रिसेशन होता है। I want to join your social media department, applied 2 times but didn't get any response. So I think Asif Chaudhary Saab is the right guy to reach him out on LinkedIn or Instagram, wherever. He is the one. अभी हमने बहुत सारी हायरिंग्स रिसेंट की हैं सोशल मीडिया में, तो I don't know why you were not hired. अच्छा जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। These are the cyber. Are there any cybersecurity opportunities available on Devsinc? We are building our cybersecurity department for next year. Yes, so do apply. But right now हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। अभी इस टाइम पे, रिसेशन टाइम पे, it's difficult to find cybersecurity services for us at least. So you should start night shift so that student who are studying in university can start working. We already do night shift, but हमारे पास ट्रेनर्स इतने नहीं है कि हम आपको रात के उसमें ट्रेन कर सकें। ट्रेनर्स की कमी है बॉस, हमारे पास जगह की कमी नहीं है, ट्रेनर्स की कमी है। We have a 270,000 square foot of campus available. We can have the capacity of setting 3,300 employees at the same time, but हमारे पास enough trainers नहीं है कि हम इतने बंदों को ट्रेन कर सकें। So that's a problem. Please share some tips internship interview. But just be yourself and try to learn skill. That's the tip. I don't think there is any. There are ways to crack the code, but I don't believe in them. Just be yourself and see if the company hires you. हेल्थ सेक्टर में अपना ग्रो करना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेल्थ सेक्टर में वी आर देयर। वी आर आई थिंक
10% of our business does come from health sector. We are not very focused on any niche, but health sector we are serving. I started services tech company, did pretty well initially, but started struggling after 3 years. What's the best way forward to find US based recurring clients? Grow with your clients. You find US based client, but grow with them. Usually अगर आपके clients succeed नहीं करेंगे तो आप भी succeed नहीं करेंगे. तो try to find clients that are succeeding with you. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आपके क्लाइंट सक्सीड नहीं करते और वो छोड़ जाते हैं, तो आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं थे, वो लॉन्ग टर्म ही थे, वो बन नहीं सके, तो उनकी सक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. Devsinc work more on development other than digital marketing and SEO as well. Can you please let me know either? अच्छा, we are building our digital agency, लेकिन इधर इसका बिजनेस मुश्किल है, थोड़ा कम है, पैसे भी कम है, और हमारा DNA भी जो है वो जरा टेक्निकल है, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट हम जरा स्लो बिल्ड कर रहे हैं, बट वी आर बिल्डिंग इट. UI UX, switch the career from business and to UI. Yes, we hire them. If you have switched your career, we would love to hire you. What is the future of Devsinc? Can we compare it with AVN? I don't know what AVN is, but Devsinc ka future, I think we have our planning. But we understand that plans are everything and planning is everything and plans are nothing. So हमारा plan तो यही कि we want to become the first $1 billion services based company based on our own revenue, not on the valuations. And we also would want to become an 80,000 employee company by 2030. So that is our vision. We want to grow at a steady pace of 100% every year, or at least 70%. What is the requirement for becoming a CEO? To become a CEO, you need to be a good leader. You need to be an enabler. If you cannot enable people, if you cannot delegate and make other people leaders, you are not a good CEO. Read a book called Extreme Ownership. It's a very good book for leadership. So do read that. I think it will help you. Sir, can you please guide me about getting an internship, about job after a job gap of 2 years in the field? 2 years का gap matter नहीं करना चाहिए अगर if you have a valid reason. Any respectable company should understand that yeah, there are things happen in your personal life and you go off and on, that's fine. तो इसलिए 2 साल गैप है, उसके बाद इंटर्नशिप ना करें, जॉब पे आए, इंटरव्यूज दें, थोड़ा इंटरव्यू टाइम लगेगा. नॉर्मली इट टेक्स एन इंजीनियर 3 months ऑफ इंटरव्यू टू क्लोज एन इंटरव्यू ऑन एवरेज. सही है, तो जल्दी हिम्मत ना हार जाया करें कि अभी मुझे जॉब नहीं मिली तो बस मैं हिम्मत हार गया हूँ. थोड़ा सा टाइम दें. एक आध रिजेक्शंस आर फाइन. रिजेक्शन तो लाइफ में अच्छी होती हैं. रिजेक्शन तो आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करना है. तो सर, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आई एम करंटली डूइंग अ जॉब? वी विल अनाउंस दैट ऑन आवर पेजेस. टाइमिंग का भी मुझे खुद आइडिया नहीं है. मैं एक स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर एफएससी वालों को हम नहीं ले रहे प्लीज अभी. हाउ डू यू सी डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर? इट्स अ वेरी गुड करियर if you're good at it. If you're not creative, it's a very bad career. So if try to find out who you are as a person, then decide your career. Kindly visit Lahore Garrison University for boot camps. So please reach out to have them reach out to us, and we will reach out to them also, and we would love to visit. How to sustain job along with freelancing with progression? So there is no secret recipe. You have to work hard. You have to work double shift. अगर शुरू में there is an Harrington strategy that I personally think is a very good strategy कि यार शुरू में you have to work extra shift to if you want to scale something out of it. तो दोनों को साथ लेके चलें जी. वीकेंड्स पे काम करें, लेट सेटिंग करें, ताकि इवेंचुअली आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकें. I don't have much to say. I would say you are working on a great cause. People from different background will be facilitated. May Allah bless you with best of both worlds. Thank you so much, Omar Salim Saab. Your words means a lot. I think people don't realize this, but leaders of the industry and CEOs also needs a lot of appreciation. जैसे हर बंदे को चाहिए होती है, ऐसे हमें भी चाहिए होती है. Your words really keeps us going. Thank you. Why every company prefer references? We don't prefer references. We hate references. So we actually hate is a good word ना. लोग कहते हैं hate is a very strict word. We hate them. Don't come with references. If you come with references, we will reject you. We are against references. We are against nepotism. तो पता नहीं कौन सी कंपनियां ये कर रही हैं. ये कंपनियां अराउंड भी नहीं होंगी बहुत अर्सा. As you said now कि अमेरिका चक्कर लगे आए तो क्या हम अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह जाएं तो हमने अच्छे क्लाइंट्स ढूंढने में हेल्प मिलती है, और आप ये चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि ऑफलाइन बैठ के हम क्लाइंट ढूंढें? नहीं, ऑफलाइन ढूंढें. ऑफलाइन ही क्लाइंट्स मिलते हैं. मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ट्रैवल करें तो लाइफ में लर्न करें. कुछ लोग, पीपल आर डिफरेंट. सम पीपल आर वेरी क्रिस्मेटिक. दे कैन क्लोज अ क्लाइंट व्हेन दे गो समवेयर. तो if your personality, बस जी मेरे पास 4 minutes और हैं and then I need to close, but I'll try कि जितने question हो सके उसमें आंसर कर दूं. If you think you have a charismatic personality, you can go there and close clients by going to the US, going to England. Sure, try that. Everyone has their own personality. You will find out. मुझे personally लगता है कि offline clients ज़्यादा अच्छे से close हो सकते हैं, लेकिन traveling helps you build an exposure
and build a diverse mindset in your mind so that you can grow a good team also. तो ट्रैवलिंग इसलिए ज़रूरी है. लेकिन यूएस जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है. बहुत सारे बिजनेस पाकिस्तान में ग्रो हुए हैं जो कभी बाहर गए नहीं और बहुत स्केल किया उन्होंने बिजनेस में. तो आई डोंट थिंक दैट्स हम मैं अपनी बात करता हूँ कि वी in 2013 or 14 before going to the US, my own product, not services, just product, was doing $1 million in revenue, and from within Pakistan, no outside client, within Pakistan. तो पाकिस्तान बिजनेस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर्विसेज के बिजनेस में प्रेफर करेंगे. अगर आपको यूएस से क्लाइंट मिलते हैं, they'll pay you more. Can I apply for internship program at your Islamabad office as I have electrical engineer degree? Have done full, yes. Agar if you have done full stack development application development course from Dev Nation, yes, you should apply for an internship. How can I apply it at university? I have a problem of stammer by nature. That's fine. That's not an issue at all. Stammer is not an issue. We do have many people that have this issue, and that's not a major problem. We are very understanding of that issue. In how many cities will Devsinc open its offices? Right now, we are in Lahore and Islamabad. We are opening an office in Faisalabad and Karachi next year, inshallah. Sir, how to handle toxic environment while working in a company? Environment, you build your own environment. It takes you some time. बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एंड बहुत ज़्यादा देखो, डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. ट्राई टू बी द चेंज दैट यू आर लुकिंग फॉर अदर्स, दैट यू आर लुकिंग इन अदर्स. तो आई थिंक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट या तो इतना ज़्यादा हो कि आपका कल्चर का पार्ट बन गया, तो फिर वो कंपनी आपके राइट फिट नहीं है, वो कंपनी छोड़ दें. लेकिन इफ़ यू थिंक यू कैन ब्रिंग इन सम चेंज, इट्स अ स्लो प्रोसेस. डू वांट दैट, डू दैट. डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज के you hit a major block doesn't mean that you should change the road. Try to be patient also, or हो सकता है कि you are also part of the problem too. So try to see if you can improve. The toxic work environment is a very normal thing. It can be there in an organization, but you are the environment. You build your own people. Is having junior developer work as a 10-year plus resource in front of client fair? No, it's not very fair. But if the interviewer who is going there is clearing their interviews, that's up to the client to see if he wants to hire you or not. I'm doing freelancing on Upwork and earning up to $2,000 per month, but want to how and from. Sorry, your question is gone. पता नहीं कहाँ गया. From where to get high paying clients? I think Upwork पे अगर आप 2K वाले clients ढूंढ रहे हैं तो Upwork पे ही many clients मिल जाते हैं, 10,000 वाले मिल जाते हैं, 8,000 वाले भी मिल जाते हैं. तो ये मसला Upwork का नहीं है. I think you should learn the art of negotiating better prices. It's not a big deal. I know how to hunt clients on Upwork and generate $10,000 for a company and know basics of web technology, but I want to outsource developer. Need your advice. So you are already generating, mashallah, whatever you are doing and generated $10,000. Try to do that with your employees. Try to outsource it. So delegate it. If you can do that, you have a business out of it. So I think that's how you grow. Is it okay to switch in fields like from web to Android and vice versa? हाँ, ये that should be fine. Programming के साथ बहुत ज़्यादा रिलीजियस ना हो जाया करें, ये स्विच करते रहा करें ताकि आपको साइड टेक्नोलॉजी का आइडिया रहे. इसमें मास्टर ऑफ वन होना चाहिए लेकिन जैक ऑफ ऑल होना चाहिए आपको. Can non-tech professional join Devsinc? Yes, we have a training program. You need to if you are coming through a technical if you are coming on a technical job, you need to clear our interview. Can I join Devsinc as Chrome extension developer? I don't think we are working on that, but you need to reach out to HR to know the latest. I don't know the latest. Knowledge is only 15% of your success, and attitude is 85%. What plans do you have to improve the attitude and soft skills to remain in a can-do attitude? So we have this cultural. Ali Jafri Saab, I've seen your messages also. I'm sorry, I've been very, very busy. I couldn't reach out to you. I think you are offering the same service that you are asking question on. This is a very good strategy, and I respect that. I will reach out to you. I think the can-do attitude, you need to build that in an organization that comes from proper strategy and working with the right people. So we have our human resource development department that comes with the right training at the right time, so that they can grow also. Sir, your favorite bike? My favorite bike has always been Hayabusa. I have a black Hayabusa 2nd generation. I love it. How to make the basics? How
to make the basis of starting a startup? Is Upwork or freelancing platform the only platforms, or making the basic? So starting a startup of services industry is, it's very easy if you go on Upwork. This is not required, but Upwork is a very easy platform for you to build a startup. So I personally think it's a great platform. उसके अलावा बहुत सारे होंगे, मुझे जिनको आइडिया मैं तो उनसे बता सकता हूँ. I have sent email regarding an accusation. Ibrahim Waqas, kindly look after. अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मुझे याद है आपने भेजा. Do you still code? When did you stop coding yourself? I last coded in 2014. I love to code. I still feel like coding. I did code a few apps here and there, but it's been some while. But if I would say, okay, what is my personal passion, what has been my personal passion, I enjoyed coding a lot. It's amazing. How should I validate a product idea? How much time should I spend on validation? So validation happens by conducting interviews. You make assumptions about your customer, but do get it validated by your customers by conducting interviews. And do that earlier. Later stage में ये मुश्किल हो जाता है. तो validation को earlier कर लें. In Pakistan, there is a very small fraction of opportunities related to data science, data engineering, and some other data related jobs. Why? The reason is कि data science and data engineering के बहुत अच्छी education available नहीं है, और data के ऊपर आपको experience resource ही काम दे सकते हैं. हमने भी build करने की कोशिश की, लेकिन सिवाय experience के कोई काम नहीं मिलता. It's very difficult to train people in data science, and that's why there are lesser jobs. जो भी लोग big data के नाम पे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, except a few obviously. लेकिन it's difficult to build a department of data science unless we have a proper education on that. Does Devsinc has any idea at data science related positions? I have no idea. Waleed sir, please check our pages or reach out to our HR. मैं थोड़ा Instagram देख लूँ जी. It becomes really hard to work done from the team members. It's really hard to make them think critical. Any tips for that? So it is your job. I'm assuming that since you are asking this question, you are the CEO or the decision maker of the company. It is your job to train your people or make them think critically. To find out, तो करें find out कि कैसे ये mindset बनाना है. आपका अपना mindset यही था, इसलिए आपने company बना ली. तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बना पा रहे? What kind of leader are you? And if you cannot inspire people and enable people to think critically, then you should not be the leader. Make somebody leader जो कि ये कर सकता हो. I'm a fresh graduate. Sorry, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप CEO छोड़ दें. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये learn कर लें. ये leadership सीखी जा सकती है. There are books out there that can teach you. तो read a lot, please. Read a lot. Study करें लोगों से. अपने सर्कल को ऐसा बनाएं जो आपको कुछ सिखाते हो. If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. अच्छा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए? लिंक इज इन द बायो. आई थिंक द डेट हैज बीन पास्ड, बट आई थिंक यू कैन स्टिल अप्लाई. आई डोंट नो. If you want to invite, if we want to invite you for Air University Islamabad for a tech event, how can we get in touch with you? Please send me a DM and I will get you connected with my PR guy and he will arrange that, inshallah. I would love to come to Air Universities. I'm coming to Islamabad next week anyway. Sir, what do you suggest? I want to be an entrepreneur and do I start a product-based or project-based company? So whenever you start with this thing, I want to be an entrepreneur, you are a entrepreneur. Please don't do that. Come up with a problem. Why do you want to be an entrepreneur? Why are you doing this? Just because somebody else does it and that's why you're doing it? That's a very wrong approach. Don't do that. You will not be successful. You will not make money. You will get depressed and hurt yourself. Please don't do it. If you have a problem and you have understood a problem, then solve it. Just because you have this passion and you don't have an idea, don't do it. Don't just jump into it. Khair, I think just read about it a lot. वो जो Lean Startup is a good book. Startup about the Art of Start is a very good book. Guy Kawasaki मेरे प्रोफेसर भी थे वो स्टैनफोर्ड में, तो I think he has written a very good book. तो इन बुक्स को पढ़ें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कब स्टार्ट करना चाहिए, when you should start. Can a person found a software house like Devsinc if he himself is not a developer? You don't need to be a developer to found a software house. It helps if you have some development experience. You just, again, if you need to understand the problem. Why are you building it? What is your unique thing? What is your unique selling point? And so unique selling point comes in the how of it, but why is very important. But this skill is not super important to have. If you have it, perfect. You don't, that's fine. I'm a founder and I'm running a software services company. My model is B2B. Can we meet you in person? Faiz Rani sahab, I would love to meet you in person, but मेरा schedule थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है. तो I can try. You reach out to me and I can try कि मैं time निकालूं, लेकिन मसला होता है आजकल. How can agency projects, most of these client on Upwork, AngelList and LinkedIn wants
freelancers, not agencies. It's your job to convince them. If you think agency model is this, and if you want developer and you cannot figure it out, then have your developers go directly and pay them good salaries so that they don't leave you. How are we able to scale your company from 10 to 100 employees within 6 months of time span only? Again, 6 months पे बहुत ज़्यादा sold ना हो. ये अब last question I really need to go. And thank you so much for such a huge response. I would do this more often inshallah. क्योंकि जितने questions मुझे आ रहे हैं मैं I cannot answer them in writing. So I would go live. I'll try to go live every other week so that I can answer them all. तो 10 to 100 के फिगर पे बहुत ज़्यादा सोल्ड ना हो कि हमें ये लाजमी करना है. ट्राई ये करें कि अपने बिजनेस की फंडामेंटल्स को अच्छा करें. देखो 10 बंदों की कंपनी के ना फंडामेंटल्स और होते हैं, 100 बंदों की कंपनी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है. इफ यू डोंट हैव फंडामेंटल लीडर्स इन योर हायरार्कीज ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्केल. जस्ट बिकॉज यू क्लोज अ गुड प्रोजेक्ट, जस्ट बिकॉज यू हायर गुड इंजीनियर्स, दैट डज नॉट मीन यू विल scale to 100 employees. You need to have your very fundamental believers in your company. They believe in the idea. If you are just hiring them and building them on the hopes के यार they will bring money for you, this mission, इस मिशन में तो आप खुद भी बहुत देर सोल्ड नहीं रहेंगे. थोड़े से बाद आप खुद भी बर्न आउट कर जाएंगे और फिर डिप्रेस भी होंगे, जैसा कि सारे होते हैं. हमारे पास लाइव एग्जांपल मौजूद है आंद्रे अगासी की और कितने बड़े बड़े अचीवर्स की, जिन्होंने जब भी कुछ अचीव किया उसके बाद वो डिप्रेस हो गए, क्योंकि अचीव जो करना था वो बड़ा सेल्फिश गोल था. उस सेल्फिश गोल से ऊपर उन्होंने सोचा नहीं और इसी वजह से डिप्रेशन भी हो गया. तो लॉन्ग टर्म ये चीज़ चलती नहीं है. हैव अ वेरी बिग गोल. सो मिलियन माइल्स इन 1000 years, बड़ी प्यारी बुक है जी. उसमें वो कहते हैं द मूवी ऑफ अ फॉरेस्ट इज बेटर देन अ मूवी ऑफ अ ट्री. तो बिल्ड अ मूवी फॉर अ फॉरेस्ट, यानी कि कुछ ऐसा करें मूवी में जिसमें सबका भला हो रहा हो. सिर्फ एक ट्री का फायदा करने का कोई फायदा नहीं है. इज इट नेसेसरी टू स्टडी फ्रॉम लम्स, स्टैनफोर्ड टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी टू फाउंड अ जायंट कंपनी और रन अ ग्रेट कंपनी? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, ऑल्दो इट हेल्प्स. So yeah, LUMS, FAST, NUST, Stanford, they are good universities. They add a lot of value and confidence in you. Personally, Stanford ने मेरी कोई बहुत ज़्यादा help नहीं की है. मुझे वहाँ जाके बस यही feel हुआ कि yeah, I know. I mean, there is nothing. This confidence came after going to Stanford के नहीं, कुछ नया नहीं सिखा रहे, ये सारा कुछ सीखा हुआ है. तो ये जो टेंशन थी ना कि वो Stanford वाले कुछ स्पेशल होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. वहाँ जाके फील हो गई. तो if you have gone to LUMS, that will help you. If you've not gone to LUMS, that's fine. That's not required. But it does help to go in a good university, in a good environment. In general, किस environment में आप बैठ रहे हैं इसका फर्क पड़ता है. But अब आपका environment अगर कुछ बन गया है तो that's okay. Just move forward with it. अच्छा जी, currently we are facing recession in US. Will 2023 be a good year for devs? अच्छा, ये जनाब, this is a very subjective question. My answer to that will be as good as anybody's guess. My personal guess is that this year 2023 first quarter will be very difficult, very very difficult. अभी ऑलरेडी रिसेशन बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है दिसंबर में, यू हैव सीन दैट. तो अगला साल फर्स्ट क्वार्टर काफ़ी डिफिकल्ट होगा. आई थिंक वी शुड बी केयरफुल. बट रिसेशन पार्ट ऑफ द थिंग है, हर 7 सालों में होता ही होता है. डिप्रेशन भी आता है, रिसेशन भी आता है. तो ये सारा कुछ चलता रहेगा. क्राइसिस इज पार्ट ऑफ, शुड बी पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी. तो ये क्राइसिस इसलिए आते हैं कि आपको कोई नेक्स्ट स्टेज दिखानी होती है, इसलिए टेंशन ना लिया करें इन चीज़ों की. हाउ डू यू थिंक अ पर्सन शुड परस्यू अ करियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट और स्विच टू एनी अदर फील्ड? दैट डिपेंड्स ऑन योर पैशन मैडम. व्हाट मेक्स यू पैशनेट? मतलब ये दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू शुड आंसर योरसेल्फ. एप्टीट्यूड टेस्ट करें ऑनलाइन, कुछ टाइम स्पेंड करें इसके ऊपर और अपना एप्टीट्यूड समझें कि किस चीज़ में आपका एप्टीट्यूड है और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है. मैंने बड़े प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामिंग में आके फेल होते देखा है जस्ट बिकॉज कि उनका पैशन नहीं था. और मैंने बहुत लोगों को बहुत सक्सेसफुल होते देखा है किसी ऐसी फील्ड में, आर्ट्स में, पोइट्री में और चीज़ों में जिसमें उनका पैशन था. तो फील्ड्स बुरी नहीं होती, सिर्फ आपका पैशन रॉन्ग होता है. Is Devsinc working on game development? Not right now. We would probably in future. Sir, every company doing training tech shift on Pasha except Devsinc. So we are not collaborating with Pasha. We are. I'm not sure. Baki companies ka they are doing it, or Pasha must be doing an amazing job. Nothing. So I have nothing but good words about Pasha. They are amazing people. They are helping the industry a lot. So we are not part of it. To answer your question, you guys are amazing, especially you, Usman Sab. Great work you are doing. Thank you so much, Mohi Sab. It helps a lot. Your appreciation really means a lot to me. Hello, what do developers do with the experience of 10 or 15 years in the field? They become managers, they become coaches. Development, in my opinion, is like fast bowling. You cannot keep on doing that for a long time. Your shoulders run out, so you burn out.
So you should become coaches, and you should teach this art to others. Please recommend a book that helped you most in reaching where you are today. There are many books. The book recently that got my attention is The Courage to Be Disliked. The Courage to Be Disliked. It's amazing book. Amazing book. उसकी theories कमाल है. तो please do read that. I think it will help you. वैसे पाकिस्तानियों को in general चाहिए कि अनारकी पढ़े. अनारकी इज अ गुड बुक. मुश्किल है थोड़ी सी, वो है, लेकिन पढ़ें अनारकी बुक. दैट विल आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस के व्हाई डू यू हैव दिस insecurity about English language all the time. Why लम्स में रिक्शा अलाउड नहीं है? Why जो हमारा गार्ड जिसके पास वेपन होता है वो पैंट शर्ट क्यों पहनता है, और जिस गार्ड के पास वेपन नहीं होता वो शलवार कमीज क्यों पहनता है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे कि हमारी इनसिक्योरिटीज कहाँ से अराइज हुई हैं. एनार्की इज अ गुड बुक, स्पेशली बड़े सगी पाक हिंद में हर बंदे को पढ़नी चाहिए बुक. तो डू रीच इट. And thank you so much, guys. There has been a lot of question here and here, but that's it. I have to run into another meeting. See you again next week. Hopefully, I'll try to do it more often. I'll try to go live more often. I'll try to announce it also. But stay tuned, and I would love to help if I can. Thank you.